गुड आफ्टरनून फ्रॉम निनबिंग। मैं ट्रांगान एरिया में रह रही हूँ एंड मेरे हॉस्टल से व्यू काफ़ी सुंदर है, लाइक माउंटेन्स एंड वाटर। एक्चुअली गुड आफ्टरनून इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे को चेक इन बहुत लेट मिला एंड जब मैं सापा से निकली थी, मैं यहाँ पे सापा से आई हूँ एंड जब मैं सापा से निकली थी तो उन्होंने बोला था कि मैं 6 बजे पहुंचूंगी सुबह एंड आई वाज लाइक ओके कि मेरी नींद कंप्लीट हो जाएगी। बट देन आई स्लेप्ट एट 12 एंड आई रीच्ड हियर एट 4:15 एट द टैंकॉक एरिया एंड देन आई वेटेड 1 आवर क्योंकि कैब ही नहीं मिल रही थी एंड देन फाइनली कैब मिली। एंड इवन दो मैं अगर यहाँ जल्दी भी आ जाती तो मैं क्या ही करती, तो आई वाज जस्ट सिटिंग देयर क्योंकि वहाँ पे भी सनराइज होता हुआ टैंकॉक बहुत सुंदर लग रहा था। देन आई केम हियर एंड देयर वाज नॉट अर्ली चेक इन क्योंकि पूरा बुक्ड आउट था, तो मैं फिर हैमॉक थे यहाँ पे एंड वाटर है साइड में, तो आई वाज सिटिंग देयर। अच्छा लग रहा था वहाँ पे बैठ के। फिर आई हैड ब्रेकफास्ट एंड देन मैं 1 घंटा उसी पे सो गई हैमॉक पे एंड आई गॉट माय चेक इन अराउंड 11:30-12 एंड देन नाउ फाइनली इट्स 1 o'clock. I planned my day now, like after taking a bath I am late, so I am changing the plan. So I'm renting a cycle for the day. That's my friend for today. साइकिल रेंट की है मैंने एंड सभी रेंट करते हैं यहाँ पे, इट्स वेरी कॉमन. आई हैड नो प्लान्स ऑफ रेंटिंग इट बट देन हॉस्टल लेडी आस्क्ड मी इफ यू वांट टू, सो आई आस्क्ड हर द प्राइस, सो इट वाज रियली cheap and then I was like how to lock it, so she was like you don't need to lock it because everywhere they are going to charge you parking, so it will be safe. And I was like how much? So it was equivalent to what I am renting this cycle for. I have to pay the parking fees like equivalent. And the best part is I can stop anywhere now and यहाँ पे इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लगता है, इसलिए मैंने स्कूटी नहीं ली, ऑल्दो यहाँ पे कोई पुलिस नहीं है बट स्टिल. So I'm at Hoa Lu Ancient Capital and a lot of history is attached to it and it's known for its architecture. And मैंने सोचा था ये एक temple होगा, but it is a huge complex full of architectural buildings. Like it is so big of a complex that people have rented bicycles to take a tour of it. So उस बड़े टेम्पल में it turned out to be a temple. This one was half museum, half temple. Museum because यहाँ पे king के वो jewelry पड़ा हुआ है and वो बड़े वाले temple में there were king, queen and someone else as well. And वहाँ पे they offered them a lot of utensils, some money, ancient money guide showed, and also big packets of like biscuit. एक ही उसमें 10-15 cellophane paper से ऐसे पूरा बुके टाइप बना के नहीं होता है वैसा टाइप का. And they also had alcohol served to the king, like beer, some water also, but I had a question mark on alcohol, so I was not able to understand. But I think Buddhist में ऐसा होता है because I saw Sikkim में भी they were offering alcohol. So if you know the answer, let me know in the comments, please. Hoa Lu Ancient Capital was Vietnam's first capital from 968 to 1009 AD, established by Emperor Dinh Tien Huang. Its strategic location surrounded by limestone mountains and rivers protected it from invasions. अगर आप आज के टाइम यहाँ विजिट करते हो तो आपको एंशिएंट टेम्पल्स देखने को मिलेंगे जो एम्परर्स दिन और ले को डेडिकेट किए गए हैं. ये टेम्पल्स ट्रेडिशनल वियतनामीज आर्किटेक्चर और हिस्टोरिकल रेलिक्स का बेहतरीन एग्जाम्पल है. I'm finally outside the complex. मेरे को अंदर 2 घंटे लग गए approximately, and now I'm off to Tuyet Tinh Coc, which according to my knowledge is a cave, and यहाँ से 5 minutes की walking पे है. So I'm not going to Tuyet Tinh Coc because I went to the counter and asked that how much time will it take inside देखने में. So she said like 45 minutes. I decided to skip that for now. अभी मेरे को Mua Cave जाना है and मेरे को कुछ खाना भी है, तो मैं Mua Cave के लिए लेट हो जाऊंगी अगर मैं यहाँ जाती तो, इसलिए I decided to skip right now and maybe tomorrow morning I'll try to come. I rode like 5-6 kilometers and अभी मैं लंच पॉइंट पे पहुंची हूँ and मेरे को अभी 2 किलोमीटर और आगे जाना है to Mua Cave and शायद बारिश होने वाली है. And cycling is fun, like it is very tiring but fun. Like locals तो it is daily life, तो उनकी शक्ल पे ऐसा कुछ नहीं दिखता है, but a lot of locals have been doing it, so it is like a local thing here. And जो टूरिस्ट साइकिलिंग करते हुए दिखते हैं उनकी शक्ल पे रोना दिखता है, जो कि मेरी शक्ल पे भी दिखता है. But when the wind comes to your face, it's like a relief, like wow, it's like cycling is a nice experience. तब फील होता है. 5 बज गए हैं, अब मैं जाके लंच कर रही हूँ.
So I'm outside Mua Caves ticket counter and I asked the guys it worth doing right now. So he said it is dark, so do it tomorrow. And it is just 6 p.m. right now and क्योंकि बारिश का मौसम था so it's dark. Otherwise it is open till 7 तो हम कर सकते थे but 500 steps चढ़ने पड़ते हैं. And I said हम because I asked a girl जो कि हॉस्टल वर्ल्ड पे मेरे को मिली and since I booked my hostel through हॉस्टल वर्ल्ड तो वहाँ पे उन्होंने ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए हैं of the area you're booking for. And then you can go and hang out with people like जो other hostels में भी रह रहे हैं उनके साथ भी hang out कर सकते हो, which is really cool I think solo travelers के साथ. I'm heading back again 5 kilometers. I think मेरा पूरा दिन आज cycling करने में ही निकला है and my legs are paining और मैंने कुछ नहीं किया है आज seriously. Guys, here's the truth. मेरा दिन चाहे जितना भी बुरा गया हो, चाहे मेरी बात ना बनना जगहों पे पहुंच के मैं वहाँ जा ही नहीं पाई, या फिर सुबह बस वाला सीन जो 4 बजे पहुंचा दिया था, बट जितना भी बुरा गया हो, I just loved my day. I enjoyed cycling, listening to music and sometimes also singing out loud क्योंकि roads पे कोई होता ही नहीं है. It is like empty and big roads. It was quite fun and कभी-कभी हवा चल जाती थी तो और अच्छा लगता था. So I had a great day. Like मैंने ऐसा कुछ पहले नहीं करा. So I had a great day with myself and I think at the end of the day that all matters कि तुम कैसे देख रहे हो अपने दिन को. Guys, this is the Trang An area जहाँ पे कल आएंगे बोटिंग के लिए. But it looks so beautiful at night with these lanterns. Loving it. Good morning from another beautiful day in Ninh Binh. I am just loving Ninh Binh. Like I don't know what exactly about Ninh Binh I love, but I think it is waking up to such beautiful view, like the mountain, water, and the same is within the hostel. Right now I'm just out like 100 meters out of my hostel taking a walk. I am living in such an offbeat place कि यहाँ पे 1 kilometer तक आपको कुछ नहीं मिलेगा types. It is very calm, very peaceful. So I liked it, but like 9:30 तक सब सोने चले जाते हैं ऐसा सीन है. और दूसरे ट्रांगान में जहाँ पे मैं कल जा रही थी मुआ केव की तरफ, वहाँ पे बहुत सारे hotels थे and वहाँ पे बहुत सारे like I could see people chilling, like the foreigners having a drink and talking and all that. Sitting just right outside, like their hotel is there and they're sitting here just across. So yeah, that's how it is here. So it's breakfast time. This is scrambled eggs with bread. So इनका bread ऐसा ही होता है हमेशा. This is coffee with condensed milk and these are some seasonal fruits. So this is yogurt and this one is passion fruit. बाकी तो you already know the fruits. So I'm back in the Trang An area for the boat tour and this is how it looks in the daytime. सुंदर लग रहा है with the lanterns, बस light में ज़्यादा अच्छा लग रहा था रात को. So let's go to the ticket counter now. So there are 4 routes. I got my route 2 ka ticket, which was a combination with Khe Coc Island. Route 2 and route 4 are the combination and they will cost you $300,000. And route 1 and route 3 would cost you $250,000. All these routes are of 3 hours only. So I just went for route 2. So I'm doing this tour with a person I met on Hostel World, जिसके बारे में Hostel World मैंने कल बताया था आपको. कल वाला person was another. Now it is another person. He's from India only. I think एक बोट में 4 जने होते तो 2 जने अलग होंगे. So yeah, let's go and have some fun. So we are walking towards the entry point and यहाँ पे पूरा एक छोटा सा म्यूजियम टाइप बनाया हुआ है जहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है and ये stones रखे गए हैं. ऊपर जो lanterns है, they are looking so pretty. So we've entered the cave. ऊपर से पानी भी गिर. So this is stop number 1. Okay. So we are 3 people on the boat. One girl from the Philippines has joined us and she's quite nice. What a beautiful painting on the vase. The doors are also carved differently.
mountains you see behind me are actually maximum 1300 feet above sea level and one of the most visible and famous examples of karst features. And these karst landscapes only form in humid environments. And ये जो सारे माउंटेन्स हैं ये लाइमस्टोन्स वाले हैं. सेम आपको हालोंग बे में भी दिखेंगे और निनबिन में भी सेम है. एंड these are just amazing. Cave number 2, वांग केव. मस्त अच्छा लग रहा है ना, ठंडा ठंडा. ये वाला केव नंबर 3 है एंड ये बहुत नीचे है. आई थिंक हमको लेटना पड़ेगा. केव्स में इतना ठंडा लगता है, मतलब मन करते वहीं पे बाहर आके इतना धूप है. फोटो सेशन and umbrella is saving us. Too hot. The temple number 2 and stop number 2 as well. So we've done 3 caves so far and this is the second temple. सिंस ये ह्यूमिड इन्वायरमेंट से फॉर्म होते हैं तो आपको मेरा चेहरा देख के फुल ऑफ स्वेट पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे कितनी ह्यूमिडिटी. आई मीन देयर इज नो सन, फिर भी इट इज सो हॉट. आई कांट टेल यू. I think this was the last cave. It's so cool inside. Khe Coc Island is why we chose route 2. यहाँ पे एक टेम्पल है जो मैं अभी विजिट करके आई एंड इट्स द सेम. जितने भी टेम्पल्स अभी तक हमने देखे वैसा ही है एकदम अंदर से. नाउ लेट्स सी और क्या है यहाँ पे. This tortoise formation is quite famous in Ninh Binh, I think, क्योंकि मैंने कल भी देखी थी and आज भी देख रहे हो. 2 temples before you enter the Khe Coc Island. With the ticket you have to show it again here. So I was looking for my ticket in the bag and मेरे को नहीं मिल रही थी. But the guard was like, just go from here. मतलब तुम उसको स्कैन मत करो, इस वाले रास्ते से निकल जाओ जहाँ पे स्कैनर नहीं था. एंड मुझसे पहले 2 जने आए एंड दे शो देयर टिकट एंड उनको बोला इट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर. सो उनको नहीं जाने दिया. आई थिंक बिकॉज इट्स रिटन ऑन माई आई कार्ड Khe Coc, दैट्स व्हाई ही वाज लाइक यहाँ से चले जाओ. So these huts look like this from inside. Okay, so I'm following the boards. I don't know exactly where to go. What am I looking at? क्योंकि यहाँ पे ना guides है, ना you can hire a guide to understand things. So I'm just following the arrows जहाँ पे जाना है. I'm at number 3 communal house right now. This. Everywhere it is written no smoking or no fire because these huts can catch fire. And this. The fire looks pretty real. Those are corns. Behind me is the electric station and it was full of musical instruments and it was really nice. And my camera, the phone I shoot on, has died. Not
died as in like battery dead, but it says that temperature is too high. Let it get back to normal. So I'm going up there. A lot of stairs, and I think I'm the only one doing this. There are even more stairs. I don't know what is it leading to, but I will go here. Guys, there's nothing inside. Look, it's empty, but the view is just amazing. So this is the whole Khe Coc Island. You can see from here. It's just lovely, full of huts, water, and in that area you can see some boats as well. I think it's not the correct season to be here. Maybe January, February would be the correct season because it's really humid right now and I am all drenched. I'm going to take that electric shuttle and get to the boat point so that we can get back. Now I'm out. उसके बाद कोई boat tour नहीं हुआ. Electric shuttle just brought me here to the ticket counter directly. I am extremely tired and now I'm going to go and have lunch. And if I have to review the place, I would say that it's fine. It's not really touristy. You won't find a lot of tourists there, but still it is touristy because I think पूरी जगह थोड़ी photo खिंचवाने वाली है and there is nothing to take away. There was no history, no nothing. I was like, I'm looking at something, but I don't know what I'm looking at. So it was like that. So now I'm going to go and have lunch and उसके बाद decide करूँगी कि कुछ और करना भी है या नहीं. Otherwise, I'll just take a bus back to Hanoi. That's tofu, noodles, spring roll and mushroom dumplings. There is chicken and ये मेरे को मैगी वाले noodles लग रहे हैं. ये मोमोज किसके साथ खा रहे हैं? डम्पलिंग्स. Not good. Not good. I found someone to share the food with, तो मैं इतना सारा कुछ खा पाई and it has started raining. तो अगर मैं कहीं जाना भी चाहूँ तो खाने के बाद मैं कहीं नहीं जा सकती. So I just booked my ticket back to Hanoi. किस्मत साथ नहीं दे रही. But okay, मजा आ रहा है. Hi बोलो. Hi. That's Ashish. That's about it from Ninh Binh. I had a great time here, even though मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया, and actually that was my plan, not to do too much and relax. But I really wanted to go to Mua Caves. It's a point जहाँ से आपको पूरी city का view दिखता है. But nature ने support नहीं किया. But these are some of the places you can visit. I will end the video here. Like, share, and subscribe, and I will see you in the next one. Bye.